Hey Glam fan, welcome and welcome back to my YouTube channel. और आज का वीडियो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे 5 मिनट्स वर्सेस 15 मिनट्स आई मेकअप चैलेंज। तो बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि जो आई मेकअप हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कटरीज आई मेकअप। सो या 15 मिनट्स में हम कटरीज आई मेकअप तो कर सकते हैं, बट 5 मिनट्स में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखते हैं 5 मिनट्स में हम कर पाते हैं या नहीं। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आईब्रो डिफाइनिंग कर लिया है और हम टाइम स्टार्ट करेंगे। अभी 3 मिनट्स का टाइम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। सो फर्स्ट हम करेंगे कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी फॉरएवर कंसीलर। ब्राउन शेड या तो मैं यूज करूँगी। Thirteen minutes left. बट प्लीज करेंगे ना।
अभी हमारे पास 9 मिनट्स और है। इसका ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम के पहले ही हमारा आई मेकअप डन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट्स का जो आई मेकअप है वो 15 मिनट्स के अंदर ही हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब बारी आती है 5 मिनट्स के मेकअप की। तो चलिए देखते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। प्लीज करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट्स का मेकअप भी हो चुका है और यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो आप 15 मिनट्स वर्सेस 5 मिनट्स। तो अगर 5 मिनट्स का मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो लैशेज है वो अच्छे से अप्लाई नहीं हुई है, लाइनर भी बहुत थिन अप्लाई हुआ है और जो डार्कर शेड मुझे अप्लाई करना था आउटर कॉर्नर में वो भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो 2-3 चीज़ें हैं जिससे डिफरेंस हमें पता चल रहा है। बट अगर कट क्रीज की हम बात करें या फिर कलर डिपॉजिट की हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छे से हुआ है। कट क्रीज भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैंने ऑलमोस्ट सेम हो गई है कट क्रीज। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये चैलेंजिंग वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर देखनी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।